अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई यूनिट 2.5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है एडिटिंग प्रैक्टिस, जो कि हम चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं। वहाँ पर भी इसी तरह की सेम एक्सरसाइज थी। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कैन हेल्प शार्पन आवर एडिटिंग स्किल्स। तो हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारी एडिटिंग स्किल्स को शार्प करती हैं, यानी कि तेज़ करती हैं। वन सच एक्टिविटी इज़ द सी टेस्ट। इन दिस एक्टिविटी incomplete words have to be completed by using the context for clues to guess what the word might be। अब इस तरह की एक्टिविटी हम गेम्स में भी खेलते हैं, यानी कि शुरू के वर्ड्स होते हैं, आगे के वर्ड्स जो है वो हमें फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एडिटिंग स्किल्स जो है वो शार्प होती हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 है, द फॉलोइंग पैसेजेस अबाउट द ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन बिगिनिंग फ्रॉम द सेकेंड वर्ड ऑफ द सेकेंड सेंटेंस। Half or sometimes half plus one extra letters have been removed from every second word. Work in pairs and first orally complete all the words. Once you have done so, write the complete passage in your notebook. तो यहाँ पर पहले आपने यहाँ पर से complete कर लेना है, इसके बाद इसे अपने notebook में लिखना है। टॉपिक है the duties of a good citizen. If we just think for a minute about the things and services we used in one day, we shall realize how much we owe to society. अब अगर हम 1 मिनट के लिए भी ये सोचें कि हम कितनी चीज़ें और कितनी खिदमात जो हैं वो एक दिन के अंदर यूज़ करते हैं, तो हमें पता चलेगा। देन हम रियलाइज़ करेंगे कि हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का कितना कर्ज़ है। किस तरह से? द मिल, अब डैश ब्रिंग्स मिल डैश फॉर यू देन डैश, तो यहाँ पर आएगा द मिल्क मैन। ठीक है, द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस। अब जो दूध वाला है वो हमारे लिए दूध लेकर आता है। ठीक है, बहुत सारे घरों में दूध वाला घर पर भी दूध पहुंचाता है, और काफ़ी जगह दूध की जो दुकानें होती हैं, जो कि हम डायरेक्ट भैंस के पास तो दूध लेने नहीं जाते ना, हम शॉप से लेकर आते हैं। तो शॉप पे कौन लेकर आते हैं? मिल्कमैन लेकर आते हैं। अब यहाँ पर द बेकर बेक्स द ब्रेड। अब हम जो नाश्ते में या वैसे भी जो भी रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, तो वो क्या होती है? जो बेकर्स होते हैं, यानी कि जो तंदूर की शॉप्स हो गई यहाँ, या फिर बेकरीज हो गई, तो वहाँ पर जो रोटी मिल रही है, ब्रेड अवेलेबल है, वो हमारे लिए बेक करता है। द प्रिंटर प्रिंट्स आवर बुक्स। द ड्राइवर ड्राइव्स the bus in which we go to the school or to the place of work. The teacher teaches the pupils, मतलब कि लोगों को पढ़ाती हैं, at a school. The doctor treats the sick and the shopkeeper यानी कि दुकानदार sells articles of daily use. The traffic police regulates the traffic so that we may travel without any fear of accident. ठीक है, अब है अगला पैराग्राफ। We must repay society for all the gifts। अब यहाँ पर है if the milkman mixes water in the milk या into milk in the milk, how can he expect other members of society to treat him fairly? If a shopkeeper gives share measure of sells substandard goods, he must be
prepare to get the same kind of treatment from others. If we ignore traffic rules, we not only endanger the lives of others but our own as well. ठीक है? Many benefits we enjoy are provided by our own country and society. It is therefore our duty to be loyal and patriotic to Pakistan. We should pay our taxes promptly, full and fully and honestly, so that we may continue to enjoy all social benefits. ठीक है? Islam lays great stress on our duties as citizen. The Holy Prophet, peace be upon him, once said, God lays so much stress on the right of our neighbors that I almost thought they would get the right of inheritance in our property. In short, we cannot be good Muslim without being good and dutiful citizen. तो देखा आपने कि एक सिटीज़न होने की हमारी कितनी ड्यूटीज़ होती हैं. हमें अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, चाहे अगला निभा रहा है या नहीं. ठीक है? हमें अपने टैक्सेस पे करने हैं, हमने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, हर वो चीज़ करनी है जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है. ठीक है? जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, इस्लाम में भी इस बात की ताकीद की गई है, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न, यानी कि एक अच्छा शहरी होना भी इस्लाम में इसकी भी तालीम दी गई है. तो किस तरह से दी गई है? नेबर्स के. अब नेबर्स भी हमारे ड्यूटीज़ में शामिल होते हैं. मतलब कि इस्लाम में नेबर्स के मुतालिक इतनी हिदायत दी गई कि आप सल्लम कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं नेबर्स को इनहेरिटेंस यानी कि जायदाद में, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ना मिल जाए. ठीक है? सो इन शॉर्ट, वी कैन नॉट बी गुड मुस्लिम, यानी कि हम एक अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि हम अच्छे और एक ड्यूटीफुल सिटीज़न नहीं हैं. ठीक है? सो एक्सरसाइज 2 है, यू आर द एडिटर ऑफ अर स्कूल मैगजीन, वर्क इन पेयर्स टू एडिट द फॉलोइंग पैसेज फॉर द स्कूल मैगजीन. तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं, उन्हें भी सही कर लेते हैं. स्टूडेंट्स हैव मेनली 3 बेसिक ड्यूटीज़. दे मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स. स्टूडेंट मस्ट हेल्प, देयर नहीं आएगा, दियर आएगा. THEIR, देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, पेरेंट भी ठीक है, पेरेंट्स. इन सिंपल होम चोर्स मतलब कामकाज. दे मस्ट नॉट बिकम अनरिस्पॉन्सिव टू पेरेंट्स और टीचर्स. ठीक है? स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड डिसिप्लिन. दे मस्ट एस्टैब्लिश a routine with studying. They learn and practice good manners and habits. They must focus on their studies. Regular reading should be a part of their daily routine, and this reading habit makes them more intelligent and knowledgeable, and moreover it also improves their overall language skills and vocabulary. Besides study, they must exercise daily. They avoid watching too much TV. They must be polite and respectful towards everyone. They must eat healthy food and avoid eating food that is unhealthy.
ठीक है। सो ये थी 2 एक्सरसाइज। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।